सुर्खियों के साथ ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया में बढ़ा भारत का मान। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के साथ सीमा का संघर्ष नहीं बल्कि सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष। ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। श्रीनगर के लिडवास में 3 आतंकवादी ढेर, इलाके की कड़ी घेराबंदी। बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार और वोटर आईडी को मान्य दस्तावेजों में शामिल करने का दिया सुझाव। थाईलैंड कंबोडिया बिना शर्त संघर्ष विराम पर सहमत। आज रात 12 बजे से संघर्ष विराम होगा प्रभावी। 4 दिन के खूनी संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच लौटी शांति। और दिव्या देशमुख ने जीता शतरंज का फीडे महिला विश्व कप। फाइनल के टाई ब्रेकर में हमवतन कोनेरू हम्पी को दी मात, प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा की शुरुआत की। पाकिस्तान के दुस्साहस को भारत के मुंहतोड़ जवाब का उल्लेख करते हुए रक्षा मंत्री ने पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए इस ऑपरेशन में शामिल सेना के बहादुर जवानों को नमन किया। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए बताया कि सैन्य कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया। और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर, लश्कर-ए तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और ISI का, जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है। अध्यक्ष 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने कई एयरबेस पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हमले का जवाब में हमारी कार्रवाई ऑपरेशन सेना की तीनों सेवाओं के बीच शानदार तालमेल का बेमिसाल उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन का एक बेमिसाल उदाहरण था। जब भारतीय वायुसेना ने आसमान से हमले किए, हमारी थल सेना ने जमीन पर मोर्चा संभाल लिया। हमारे जवान नियंत्रण रेखा पर पूरी ताकत से डटे रहे और पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा देने के लिए किया गया था। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के दौरान सेना को लक्ष्य चुनकर जवाब देने की छूट दी गई। ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए। और इसी वजह से आर्म फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वो अपने टारगेट खुद चुने और करारा जवाब दें। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकने के लिए मजबूर करना था।
लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री ने देश के सैनिकों की बात की, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं बताया कि पाकिस्तान से आतंकवादी कैसे पहलगाम में आए और 26 लोगों का कत्लेआम मचाया। इतनी जानकारी देते हैं कि कभी कभी सवाल पूछना भी भूल जाते हैं। और आज ये है हमारे विपक्ष का कर्तव्य, रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए, ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। आज ये है हमारे विपक्ष का कर्तव्य कि हम सवाल पूछेंगे देश हित में, राष्ट्र हित में। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है। चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपीए के शासनकाल में देश भर में आतंकवाद फैला और तत्कालीन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकी थी। आपके यूपीए के शासनकाल में 2004 से 14 तक इस देश में आतंकवाद पनपा है, उसको जगह मिली है और उसको पनाह मिला है। कितनी घटनाएं हुई देश में आतंकवाद की, पूरा सुनाओ। कहां हुआ, कितने नागरिक मारे गए, कितनी महिलाएं विधवा हुई, कितने बच्चे मारे गए, कभी आपने सोचा? संसद के मानसून सत्र में सोमवार को कई मंत्रालयों से संबंधित सवालों के लिखित उत्तर दिए गए, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी, एमएसएमई, कृषि, सहकारिता और शिक्षा मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण उत्तर शामिल हैं। संसद के मानसून सत्र में सोमवार को कई मंत्रालय से संबंधित सवालों के लिखित उत्तर दिए गए, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी 2.0 के बारे में राज्यसभा में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 को नया रूप दिया गया है, जिसमें सभी के लिए आवास मिशन शुरू किया गया है। इसमें पहली बार घर खरीदने या निर्माण के लिए गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, जिससे किफायती आवास को बढ़ावा मिलेगा। लिखित उत्तर में बताया गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किफायती आवास नीति तैयार करनी होगी ताकि निजी निवेश को आकर्षित किया जा सके, खासकर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। इस योजना के तहत 60 वर्ग मीटर तक के घरों के लिए 1% से कम स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया जाएगा। राज्यसभा में एमएसई मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में पीएम विश्वकर्मा योजना की प्रगति की जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि इस योजना में रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसमें 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित विभिन्न बैंकों से 5% ब्याज दर पर संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किए जाते हैं। योजना के अंतर्गत 20 जुलाई 2025 तक की स्थिति के बारे में बताया गया कि अब तक 12.20 लाख ऋण आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं। इस योजना में अभी तक 11.78 लाख आवेदन प्रोसेस हुए हैं, जिसमें 3.91 लाख आवेदन स्वीकृत हुए हैं। 42,008 आवेदन अभी प्रक्रियाधीन हैं। लोकसभा में सहकारिता मंत्रालय से संबंधित लिखित उत्तर में बताया गया कि निवेशक दीदी चरण 2 के तहत देश भर में 4000 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करने की योजना बनाई है। इन शिविरों का उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को वित्तीय साक्षरता और जागरूकता प्रदान करना है। यह अभियान राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में लागू किया जाएगा। योजना का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के विजन में महिलाओं की सार्थक भागीदारी को सुनिश्चित करना है। लोकसभा में शिक्षा मंत्रालय से संबंधित एक लिखित उत्तर में बताया गया कि 31 मई 2025 तक देश में 1,46,040 स्मार्ट क्लासरूम स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें महाराष्ट्र में 5,155, मध्य प्रदेश में 9,531 और दादर और नागर हवेली में 192 स्मार्ट क्लासरूम शामिल हैं। लोकसभा में किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित लिखित उत्तर देते हुए बताया गया कि केंद्रीय बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण सीमा
3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इससे कृषि ऋण उपलब्धता में सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती की उम्मीद है। ऋषि कुमार, नीरज सिंह के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लिडवास इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। लिडवास के जंगल में आतंकियों की सूचना मिलने के बाद भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान में इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया और इसी दौरान आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की, जिसका भारतीय सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों के लश्कर से जुड़े होने की संभावना है। अभी ऑपरेशन इज स्टिल कंटिन्यू, ठीक है ना। इट वाज एन ऑपरेशन विच इज क्वाइट प्रोलॉन्ग्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है ना। दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, बट इन विच जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री एंड आर्मी they have an exchange of fire in the higher reaches. So as per the interior reports, 3 bodies are being observed and seems to be neutralized. So this is all, but still it is operation, so I would not like to divulge much at this moment. We will share details with you at an opportune time. बिहार में SIR के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने आयोग को सुझाव दिया है कि वो मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए 11 दस्तावेजों के अलावा आधार और वोटर ID कार्ड को भी मंजूर करने पर विचार करें। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सिर्फ आधार की नहीं, बल्कि 11 में से 11 दस्तावेज भी जाली दिखाई जा सकते हैं। यह एक अलग मुद्दा है। अगर कोई फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करता है तो आयोग उस पर कानूनी कार्रवाई करे। कोर्ट ने कहा कि आयोग का उद्देश्य व्यापक समावेशन होना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि राशन कार्ड, आधार और वोटर ID में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, इसलिए सिर्फ इन दस्तावेजों को आयोग स्वीकार नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए चुनाव आयोग के 24 जून के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट मामले की विस्तृत सुनवाई की तारीख बुधवार को तय करेगा। और आइए सीधा रुख करेंगे लोकसभा का, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत चर्चा जारी है। समस्तीपुर से सांसद शांभवी सिंह संसद में अपनी बात रख रही हैं। जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। भारत एक जिंदा देश है, उसकी रगों में अखंडता का और एकता का खून दौड़ रहा है और जब जब भारत की अखंडता पे और एकता पर प्रहार होगा, भारत एकजुट होकर के मुंह तोड़ जवाब देगा। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय। जी श्री अभय सिन्हा जी। तो मानसून सत्र के तहत संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है, जिसकी झलक हमने आपको दिखाई। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक अंग्रेजी दैनिक अखबार में अपने एक लेख में प्रसार भारती के OTT ऐप वेव्स की सराहना की है। उन्होंने लिखा कि हम विकासशील भारत 2047 की ओर बढ़ रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारी कल्पना करने
वर्णन करने और नवाचार करने की क्षमता में निहित होगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रसार भारती के भारत के प्रथम सार्वजनिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी के लॉन्च ने भारत के बोलने, सीखने और नेतृत्व करने के तरीकों को एक नया रूप दिया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि हमें एक ऐसा भारत बनाना होगा जहां हर एक बच्चा रचनाकार हो। उन्होंने वेव्स ओटीटी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इस प्लेटफॉर्म ने वो हासिल किया है जो व्यावसायिक दिग्गज शायद नहीं कर पाते। ये मंच दैनिक रचनाकारों को आगे बढ़ाकर वेव्स ओटीटी लोकल कंटेंट और स्टोरी टेलिंग को राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बना रहा है। थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं ने सोमवार को आधी रात से प्रभावी संघर्ष विराम पर सहमति जताई है। यह फैसला दोनों देशों के बीच एक दशक में सबसे भीषण झड़पों को रोकने के लिए लिया गया है, जो 5 दिन से जारी थी। मलेशिया के प्रधानमंत्री और एशियन के मौजूदा अध्यक्ष अनवर इब्राहिम की मेजबानी में कुआलालंपुर में हुई बैठक के दौरान दोनों पक्ष संघर्ष विराम और सीधी बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमत हुए। सीमा विवाद के चलते गत गुरुवार को शुरू हुए संघर्ष को रोकने के लिए अनवर ने जल्द बातचीत का प्रस्ताव दिया था। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों नेताओं से फोन पर बात की और चेतावनी दी कि यदि हिंसा नहीं रुकी तो अमेरिका व्यापार समझौते पर आगे नहीं बढ़ेगा। तनाव तब और बढ़ गया जब मई के अंत में एक संक्षिप्त झड़प के दौरान एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी। इसके बाद दोनों पक्षों ने सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी थी, जिससे थाईलैंड की नाजुक गठबंधन सरकार संकट में पड़ गई। कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मानेट ने बैठक के बाद कहा कि आज की बैठक सकारात्मक रही। हम आशा करते हैं कि ये संघर्ष रोकने की दिशा में निर्णायक साबित होगी, जिसने कई लोगों की जान ली और सैकड़ों को विस्थापित किया। वहीं थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथाम वेचियाचाई ने कहा कि हम संघर्ष विराम के लिए सहमत हैं और इसे ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ लागू किया जाएगा। भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने महिला चेस वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीत लिया है। सिर्फ 19 साल की दिव्या ने जॉर्जिया में हुए इस विश्व कप के फाइनल में भारत की ही दिग्गज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को शिकस्त देते हुए यह खिताब जीत लिया। इसके साथ ही वो विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला चेस स्टार बन गई हैं। पिछले साल ही दिव्या ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीता था। दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेक में हराकर 2025 की फीडे महिला विश्व कप चैंपियन बनने के साथ भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बन गई हैं। इतना ही नहीं, इस खिताबी जीत के साथ ही दिव्या देशमुख ने भारत की 4थी महिला ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव भी हासिल कर लिया है। इससे पहले रविवार को दोनों के बीच खेला गया दूसरा गेम भी ड्रॉ रहा। हालांकि एक कड़े मुकाबले के बाद दोनों ने ड्रॉ पर सहमति बनाई। दिव्या देशमुख के फीडे महिला शतरंज विश्व कप का खिताब जीतने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बधाई दी है। साथ ही उपविजेता रही भारत की ही कोनेरू हम्पी को भी उन्होंने बधाई दी और उनके अब तक के शानदार करियर के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने एक संदेश में लिखा, दिव्या देशमुख को मेरी हार्दिक बधाई, जो फीडे महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, वो भी मात्र 19 वर्ष की आयु में। कोनेरू हम्पी उपविजेता रहीं और फीडे महिला विश्व कप की दोनों फाइनलिस्ट भारत से थीं। यह हमारे देश में विशेषकर महिलाओं में बढ़ती प्रतिभा को दर्शाता है। मैं कोनेरू हम्पी के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करती हूं, जिन्होंने अपने शानदार करियर के दौरान उत्कृष्टता बनाए रखी है। मुझे विश्वास है कि ये दोनों महिला चैंपियन और भी गौरव हासिल करेंगी और हमारे युवाओं को प्रेरित करेंगी। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है बढ़ावा। हजारीबाग में देश का पहला मोती उत्पादन क्लस्टर हुआ विकसित। मोती की चमक सबों को आकर्षित करती है। रत्न गर्भा झारखंड में तो इसकी ऐसी चमक है कि कई युवा अच्छी खासी नौकरी छोड़कर मोती उत्पादन में करियर बना रहे हैं। पीएम मत्स्य संपदा योजना से मिल रहे सहारे ने मोती की चमक को और बढ़ा दिया है।
रांची के बुधन सिंह पूर्ति की कहानी भी देश के उन सैकड़ों युवाओं जैसी ही है जो पढ़ाई लिखाई के बाद खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं। बुधन सिंह एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। पढ़ाई के बाद इन्हें एक प्रतिष्ठित जॉब भी मिला, लेकिन नौकरी में इनका मन नहीं लगा। इनके ख्वाब तो ढेर सारे पैसे कमाने के थे। ऐसे में इन्हें मोती की खेती की जानकारी मिली और फिर इसमें इन्होंने करियर बनाना तय किया। इन्होंने जरूरी प्रशिक्षण ली और फिर आज इनके पास पैसे भी हैं और नाम भी। वो 7 दिन का ट्रेनिंग लेकर के 2014 से इस काम को मैंने शुरू किया और जी जान से लेकर के मैंने शुरू किया। डेली का मैं ग्राफ बनाता था अपने इसके लिए कितना काम कर रहा हूँ। बुधन सिंह पूर्ति आज मोती की खेती से सालाना 32 लाख रुपए कमा रहे हैं। यही नहीं, अपने व्यवसाय से वो करीब 400 युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। बुधन ने सैकड़ों लोगों को प्रशिक्षण देकर मोती उत्पादन में काबिल बनाया है। धीरे धीरे बढ़ते चले गए। आज हम 1,60,000 मसल्स पे काम कर रहे हैं। पौंड और वो लेक पे डैम पे काम कर रहे हैं। अभी हमारा 32 लाख के वो आसपास सालाना इनकम है। लेबर सारे पेमेंट करके सर, सारा चीज फिनिशिंग प्रोडक्ट बना करके। हम यहाँ से प्रशिक्षण 800 कुछ लोगों को दिए, 832 के आसपास में है। बुधन सिंह से प्रेरणा और प्रशिक्षण लेकर रांची की इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रोहिणी गौतम ने भी पार्ट पुर्जे ठीक करने की जगह मोती से भविष्य चमकाना बेहतर समझा। अपना जीवन संवार कर वो अब दूसरी महिलाओं को भी यह गुण सिखा रही है। इतना डिफरेंट फील्ड है ना कि अगर इस पे कोई आएगा तो वो मतलब कभी निराश होके नहीं जाएगा। मेहनत है इसमें, लेकिन निराश होके कोई नहीं जाता है। कुछ हट के लोगों से कर रहे हैं, भीड़ में नहीं चल रहे, तो यहाँ आके हमको बहुत फायदा हुआ है। मोती उत्पादक किसान बनने की चाह रखने वाले इन जैसे सैकड़ों युवाओं को पीएम मत्स्य संपदा योजना से संबल मिल रहा है। झारखंड के मत्स्य निदेशक एच.एन. द्विवेदी ने बताया कि यह योजना किसानों के लिए क्रांतिकारी साबित हुई है। ये सब डिफरेंट टाइप में, जहाँ भी छोटा जगह बड़ा स्पेस, जहाँ भी सुविधा मिलेगी वहाँ पर पहल कर सके, तो इसको भी हम लोग पॉपुलराइज करने का सोच रहे हैं। इतना ही नहीं, पॉपुलराइज होने के बाद इनके ब्रूड, इसके लिए सिप ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। आजकल श्रृंगार के साथ साथ दवाइयाँ और सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में मोती का खूब इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में मोती की खेती करने वालों के लिए बाजार की कमी नहीं है। केंद्र सरकार मत्स्य पालन के साथ ही मोती उत्पादन पर भी विशेष जोर दे रही है, जो किसानों के लिए भी कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मोती उत्पादन से युवाओं का जुड़ना सुखद संकेत है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है और रोजगार के भी अवसर बढ़ रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए अवधेश, करमवीर और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में स्थित पूर्ववर्ती गांव, जो लंबे समय तक नक्सल हिंसा और डर का प्रतीक रहा, अब विकास की नई राह पर बढ़ चला है। पूर्ववर्ती और सिलगेर के बीच अब सड़क संपर्क बहाल हो गया है, एक ऐसा रास्ता जो वर्षों से अधूरा था। देखिए डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता सोमेश पटेल की छत्तीसगढ़ से ये खास रिपोर्ट। हम आपको इस रिपोर्ट के साथ छोड़े जाते हैं, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। बीते 4 दशकों से छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का पूर्ववर्ती नक्सलियों के प्रभाव में रहा है, जहां विकास कार्य कर पाना लगभग असंभव था। ये वही इलाका है जहां हिडमा और देवा जैसे नक्सलियों का डंका बजता था, परंतु केंद्र और राज्य सरकार की पहल से इस इलाके में कैंप खोलकर लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्ववर्ती सिलगेर मार्ग पर 15 मीटर लंबा वैली ब्रिज का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। वर्षों से ये इलाका सड़क और संपर्क से कटा हुआ था। खासकर बारिश के दिनों में यहाँ के ग्रामीणों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। अब इस पुल के बन जाने से इलाके के 10 से 12 गांवों के हजारों ग्रामीणों को फायदा होगा। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजमर्रा के जरूरी संसाधनों तक उनकी पहुंच अब पहले से कहीं बेहतर हो सकेगी। एलमागुड़ा से दुलेड़ और पुअर्ती तक कुल 51 किलोमीटर की सड़क बनाने की योजना है, जिस पर करीब 53 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रामीणों में इस पुल को लेकर जबरदस्त उत्साह है। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि दशकों की उपेक्षा और अलगाव के बाद विकास की पहली मजबूत कड़ी है। ग्रामीणों को आने जाने के लिए बहुत परेशानी होता था और आज सरकार ने लोहा का जो पुल बनाया है, जिससे वहाँ के सभी ग्रामीणों को आने जाने में सुविधा हो रहा है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि ये इलाका कभी खूंखार नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब यहाँ विकास की गूंज सुनाई दे रही है। पुअर्ती और सिलगेर के बीच सड़क निर्माण नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में एक बड़ी रणनीतिक जीत है। विकास कार्य को गति देने का शासन का एक स्पष्ट मंशा है। उसी के तहत
अंदरूनी वनांचल क्षेत्र में भी सड़क, पुल पुलिया निर्माण एवं अन्य जो मूलभूत सुविधा से क्षेत्र की जनता को लाभान्वित की जा रही है। जिला सुकमा की सिलगेर से लेकर पुवर्ती के बीच में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से सड़क निर्माण कार्य की जा रही है। उसी के तहत एक बिल्ली ब्रिज का निर्माण भी, जिसमें लगभग 15 मीटर लंबाई का जो बिल्ली ब्रिज का जो निर्माण कार्य भी बीआरओ द्वारा की गई थी, जिससे क्षेत्र की जनता को बरसात के समय आवक जावक के लिए काफी सुविधा मिल रहा है। वहीं सुकमा जिले के एसपी का कहना है कि पुवर्ती और सिलगेर के बीच सड़क बनना न सिर्फ एक विकासात्मक कदम है, बल्कि ये हमारे सुरक्षा बलों की निरंतर कोशिशों और आम जनता के सहयोग का परिणाम है। सुकमा में बीआरओ द्वारा सिलगेर टू पुवर्ती, पुवर्ती से एलमागुंडा रास्ता निर्माण किया जा रहा है। सिलगेर और पुवर्ती के बीच में जो बेली ब्रिज है, जिसमें मतलब लोहा का इस्तेमाल किया गया है, और इस ब्रिज का निर्माण बीआरओ द्वारा किया गया है। काफी कम अवधि में ये ब्रिज का निर्माण किया गया है। इससे आसपास जो गांव वाले हैं उनके लिए काफी सहूलियत हो जाएगी। बीआरओ ने इस पुल को चुनौतीपूर्ण हालात इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड टू सो कम्युनल डिस्कॉर्ड अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। Our messages were two: one, zero tolerance of terrorism, and two, the right to defend our people against terrorism. So all the interactions we did, the diplomatic briefings, we called all the embassies for briefings, we interacted with the media. All of this was aimed at these two objectives: zero tolerance of terrorism and the right to defend ourselves, right to defend the people of India against cross-border terrorism. Now, the focus for our diplomacy was understandably the UN Security Council. And Honorable Speaker, sir, the challenge for us was that at this particular point, Pakistan is a member of the Security Council. We are not. So we had to achieve our objectives in a Security Council where Pakistan is a member. Now, our goals in the Security Council were two. One, to get an endorsement from the Security Council of the need for accountability, and two, to bring to justice those who perpetrated this attack. And I am glad to say, Speaker, sir, and I hope that this is appreciated and recognized by the House. If you look at the Security Council statement of 25 April, the members of the Security Council condemned in the strongest terms the terrorist attack. They affirmed terrorism in all its forms and manifestations constitute one of the most serious threats to international peace and security. And most important, the Council underlined the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable and bring them to justice. I highlight this, Speaker, sir, because this statement of the UN Security Council resonated throughout the international community. So when many honorable members asked today, where was the world on Pahalgam? I think the answer is there. The answer is there in a Security Council statement which says hold them accountable, bring them to justice, and that is exactly what we did through Operation Sindoor. Now, I also want, Honorable Speaker, sir, through you, to bring to the attention of the House a very interesting development pertaining to the TRF, the Resistance Front. When the Security Council was debating this on the 25th of April, and TRF had twice claimed responsibility for the Pahalgam attack, Pakistan defended the TRF. Pakistan tried to get any mention of TRF excluded, and in fact the Pakistani foreign minister told his parliament that this is a great diplomatic achievement. Now, I mention it because today, again, thanks to our diplomacy, the TRF has been designated as a global terrorist organization by the US government, and the same Pakistani foreign minister who took so much pride saying, I defended the TRF, says, well, now if the US has done this, we accept it. So that is where the Security Council issue stood.
If I could then, sir, move on to the diplomacy from 25th of April till the commencement of Operation Sindoor. During this period, there were obviously a number of phone calls, a number of conversations. At my level, there were 27 calls. At Prime Minister, I think almost 20 calls. About 35, 40 letters of support came in. And what we tried to do was to create a narrative, prepare the diplomacy for the launch of Operation Sindoor. And the result of that diplomacy, Honorable Speaker, sir, there are 193 nations of the members of the United Nations. 193. Only 3, apart from Pakistan, opposed Operation Sindoor. Only 3. If you look through this period, and I would be very happy to share with the House the exact positions of various governments, overwhelmingly, there was recognition that terrorism is unacceptable, that a country which has been attacked has a right to defend itself, and that India was doing exactly that. Now, when Operation Sindoor was launched, we spelled out our objectives. There was a statement, Honorable Raksha Mantri ji referred to it in his statement, where we put out for the benefit of our own people, for the international community, that Operation Sindoor was hitting the terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, from where terrorist attacks had been planned and launched. We highlighted that 9 sites had been targeted, and we said that our actions are focused, measured, and non-escalatory in nature. And we were living up to the commitment that those responsible for this attack will be held accountable. This was the commitment which was endorsed by the UN Security Council, thanks to our diplomacy. It was a commitment made by the Prime Minister to the people of India that we would hit those symbols, those sites, those planning places. So today, when I hear many questions from across the aisle, I want to say, which one of you imagined that Bhavalpur and Muridke would be brought down the way it was? Which one of you thought it? When did you even think of it during your tenure? Did it even cross your mind? In fact, on the contrary, you ruled it out after 26/11. So I think our objectives are very clear. We wanted to send a message to the terrorists. We wanted to send a message to Pakistan that do not continue this support for terrorism. And I think on the morning of 7th of May, that message went home loud and clear. Now, sir, during this period, there was, when the operations were on, when the conflict, when the activities were on, operation is still continuing. A number of countries, number of their leaders, ministers, others called up. And they called up because people wanted to know what is happening. People wanted to know what is the thinking of India. People wanted to understand what we are doing. And I would like to share with the House, sir, through you, to everybody, we gave a common message. The common message was India is exercising its right to defend itself against terrorism. Number 2, the targets which were hit on the 7th of May are known terrorist headquarters and infrastructure. Number 3, there will be no mediation. Anything between us and Pakistan is bilateral. Number 4, we will never bow down to nuclear blackmail. Number 5, we are responding to Pakistani military attacks because after Operation Sindoor was launched, they had started targeting our military facilities. And we will continue to hit the Pakistani military. If the fighting is to stop, Pakistan must request it. And that request must come through the designated channel of DGMOs. This was a common message that we had given to many people who had called us during that period. Our position was very, very clear in how we were approaching the progress of Operation Sindoor. Now, sir, many members
asked, some out of genuine curiosity, some perhaps less, what was the international support? How much international understanding was there of India's position? I would like to share with you a sample. So let me start with countries who are known to be partners of India, Quad. Quad gave a statement which says, the Quad unequivocally condemns all acts of terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. We condemn in strongest terms the terrorist attacks in Pahalgam on 22 April and call for perpetrators, organizers and financiers of this reprehensible act to be brought to justice without any delay. Now, sir, this is the Quad. Now, let us look at a different grouping, BRICS. Now, BRICS has China as a member, Russia as a member, it has Iran as a member, Brazil, South Africa, Egypt. BRICS also condemned the April 22 attack. It reaffirmed its commitment to combating terrorism, again including cross-border terrorism. Now, I would like members of this House to understand, if India is attacked, if there is a terrorist attack on India and a country says we condemn cross-border terrorism, I think it is obvious to everybody what that cross-border terrorism is. So, I then move on, sir, to the Central Asia. The Central Asian countries opposed providing safe haven using terrorist proxies for cross-border terrorism, for terror financing. Now, I can cite statements from the Indian Ocean Rim Association, from individual countries, range of them. President Putin, for example, has said, he wrote to our president and said this brutal crime has no justification whatsoever and its perpetrators will face a deserved punishment. The president of Paraguay has said that he expresses solidarity and recognized India's legitimate right to self-defense. So the main point, the common thread, sir, which I would like to bring out is that number one, a cross-border terrorism across the board has been recognized, all forms and manifestations, opposition to condemnation of Pahalgam terrorist attack, and the right of India to bring people to justice. Now, sir, in addition to that, I would particularly like to mention 2 or 3 other developments. One, the American designation of TRF. On the 17th of July, the Department of State designated TRF as a foreign terrorist organization and especially designated global terrorist. Now, this comes in the wake of the extradition of Tahawur Rana, who was involved in the 26/11 attack. And when people ask today, how successful is your foreign policy? Where is your diplomacy? I want to say that Tahawur Rana, which many of you tried for so long to get, is finally here because of us. I want to say TRF was designated not because somebody out there made a remark. TRF was designated as a global terrorist organization because our diplomacy persuaded another country to do that. Now, our strong stance has resonated across the world. I was some time ago in Germany, and standing next to me, the German foreign minister said, India has every right to defend itself against terrorism, and Germany will support this fight against terrorism. Similar position has been taken by France, similar position has been taken by the European Union. So, what I would like to highlight, sir, is that today, where Operation Sindoor is concerned, there has been, the world sees what it is about. The world realizes this is a fight against terrorism. It is felt that India has acted responsibly but firmly. Now, I would like, sir, to address one particular aspect because some members have brought it up.
and this is regarding the US activity during this period. Sir, I'd like to inform the House that on the 9th of May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in the next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear that if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. Now, sir, that attack took place and was foiled by our armed forces, and I think the House should collectively appreciate the performance of the armed forces in foiling what was a massive attack on the 9th and 10th of May. Now, our response, which the Prime Minister promised, was delivered, and it was delivered with devastating effect. I don't have to say anything. Every member has seen satellite pictures of Pakistani airfields. You can see from the state of those airfields, which shown by the pictures, what was our answer. Now, on the 10th of May, we received phone calls sharing the impression of other countries that Pakistan was ready to cease the fighting. Our position was, if Pakistan was ready, we needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. That is exactly how that request came. Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April, when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June, when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. So I would again, मैं इसको दोहराता हूँ, 22 अप्रैल से 17 जून तक। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। Honorable Speaker, sir, in the course of the debate today, some points were made by members of the opposition. I would like to respond to some of them. We were asked, why did you stop at this time? Why did you not go further? Please see who's asking this question. This question is being asked by people who, after 26/11, felt that the best action was inaction. Now, I would like, sir, to read out, because one member said, nowadays BJP members like reading from books. You get the truth in books. Sometimes you don't like what we read in books. So let me read out, sir, two excerpts from a book by the National Security Advisor of the UPA government. After 26/11, a chapter, this is a book called Choices. He says, on sober reflection and in hindsight, I now believe the decision not to retaliate militarily, but to concentrate on diplomatic, covert and other means was the right one for that time and place.
This is what he says. But did he even do that? Because 26/11 happened in November of 2008. What was the reaction? The reaction was Sharm el-Sheikh. Was that diplomatic? Was it covert? Was it military? Now, what did Sharm el-Sheikh do? In Sharm el-Sheikh, the then government and the Pakistani Prime Minister agreed terrorism is a main threat to both countries. Now, today, sir, people are saying, America is hyphenating you, Russia is hyphenating you. That is what I heard Deepinder Huda ji say. Hello, you are hyphenating yourself. I mean, you did not need a foreign country to say, please link India to Pakistan. Your own government was saying, India and terrorism is a main threat to both countries. And then they said, terrorism should not be linked to the composite dialogue. And worst of all, they accepted a reference to Baluchistan in that. Now, here is a country reeling after 26/11. And you are equating Baluchistan and 26/11, what happened in Mumbai? And you are saying that the perpetrator and the victim have both got a problem. And then now you are asking me, why didn't you go further? People who did nothing are asking a government which did so much, saying, why didn't you do more? Now, you might think, sir, that this is a one-off. But this is a habit, because this is the thinking in that part of the house. Some years ago, there was, if you remember, sir, the Mumbai train bombing. The Mumbai train bombing happened in July of 2006. In September of 2006, 3 months after the Mumbai train bombing, at Havana, the UPA government, with its Pakistani counterpart, condemns all acts of terrorism as though we are both again equal, and agrees that it's a scourge that we need to effectively deal with together. And then they directed again resumption of dialogue. So what I want to highlight is, for people who did nothing to have the temerity, the gumption today to ask a government which did so much, which brought down Bhavalpur and Muridke, to say, why didn't you do more? I think it's extraordinary. Now, sir, we also heard from one of the early speakers saying we are now facing a two-front, and that the leader of opposition has been warning us about two-front. Now, all I can say, sir, is the person who said it, and maybe the leader of opposition, must have missed their history lessons in school. I'll tell you why. Because I would like to walk you through the history of this two-front. The two-front started because of something called POK. POK was created in 1948-49 by the government of this country by not completing the job of what was to be done. Now, sir, the House should note these dates. The two-front started 1963, when the Chhattisgarh Valley was ceded by Pakistan to China as a result of an agreement. Then in 1966, the Karakoram Highway was agreed upon, which took 20 years, was completed in 1986. Now, references were made to China-Pakistan military collaboration. So when did this collaboration start? I'll give you the year, 1966. In 1966, the first Chinese military supplies went to Pakistan. When did nuclear collaboration start? 1976. 1976, when Bhutto arranged for China-Pakistan to get together on this. And in 1980s, when Prime Minister Rajiv Gandhi was visiting China and Pakistan, that was when the nuclear collaboration was at its height. Now, let me go further. You will say, why are you talking history? So let me bring this further up. 2005, Pakistan-China Treaty of Friendship and Cooperation. 2006, Pakistan-China Free Trade Agreement. 2013, handing over of Gwadar.
to China, Gwadar port to China. May 2013, announcement of China-Pakistan economic corridor. So, sir, we are getting warnings about a US-China, Pakistan-China collaboration when this collaboration has been going on for 60 years. Now, let me also address two other points. There was a reference made to IMF that, you know, why did you not stop? Why did you not stop? आपने सवाल उठाया तो जवाब भी सुनना पड़ेगा। आपने उठाया ना, आपके उपनेता ने उठाया, आपने सुनो जवाब। अब जैसे सवाल करोगे वैसे जवाब सुनने पड़ेंगे। Sir, the IMF loan which was given was approved in September 2024. It was an extended fund facility of $7 billion. Now, sir, the House should know, Pakistan is a serial borrower from the IMF. I think 16 or 17 times they have taken IMF package. Now, very interesting comparison, sir. In 2008, Pakistan got a standby arrangement of $9.70 billion. In 2013, it got another one of $5.9 billion. So the very people who are concerned today at a 7 billion package should remember a 15 billion package went through for Pakistan during that tenure. Now, reference was made, sir, to FATF. I want to say the longest period that Pakistan has been under FATF grey list has been under the tenure of the Moti government. During the Modi government, from 2018 to 2022, 1,576 days, Pakistan was in the grey list. Yes, they were in the grey list earlier also. I am not denying that. It was for a shorter period. But I again want the House to appreciate that the FATF meeting in May 2025 has kept Pakistan in the enhanced follow-up category, recognizing that the compliance of Pakistan is only partial. Now, sir, so much for Pakistan. Some members also raised issues pertaining to China. So I would like to spend a few minutes on that. So I would first like the House to appreciate, because today we are getting these lectures saying China is a great danger, China, Pakistan are together, we are warning you. So what does the Congress party really think about China? Don't go by what they say. Let us see what they did. In 2005, China was designated as a strategic partner during Prime Minister Wen Jiabao's visit to India. Strategic partner. And there is a concept, very famous concept called Chindia, sir, a belief that China and India have common interest, and the main proponent of Chindia is the party spokesman of the people opposite. Now, some mention was made about visits, including my visit. Yes, I went to China. I went to China to make our position very clear about de-escalation, about trade restrictions, and about terrorism. I did not go to China for the Olympics. I did not go to China for secret agreements. I did not go. Sir, the House should know that people were watching Olympics when China was issuing stapled visas for people from Arunachal Pradesh and Jammu and Kashmir. This is the reality of China. Now, let me really tell you, sir, how is the relationship with China. Some years ago, विदेश मंत्री जी को संरक्षण देना चाहिए। उनके स्पीकर जब बोल रहे थे, हम पूरे धैर्य से सुने। मैं बताऊंगा कितनी असत्य बातें बोली गई कल, परंतु फिर भी असत्य को भी हम हलाहल समझकर पी गए। अब ये सत्य भी नहीं सुन पाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए।
बैठे बैठे टोका टोकी करना सबको आता है, ऐसा नहीं हमें नहीं आता, मगर इतने गंभीर विषय पर चर्चा जब हो रही है तो सरकार के प्रमुख विभाग के मंत्री को बोलते हुए बैठे बैठे टोकना ये विपक्ष को शोभा देता है क्या? मान्यवर, आपने बिल्कुल उनको आग्रह से कहना चाहिए, वरना हम भी हमारे मेंबर को बाद में समझा नहीं पाएंगे। We heard today a lot about what was supposed to be the thinking. बैठे बैठे, आपको इजाजत नहीं, बैठे बैठे। Sir, we heard about warnings about China, cautions about China. You know, China is planning this, China is planning that. But sir, I want to remind this House, Doklam crisis was on. The leader of opposition decided to get a briefing from whom? Not from the government, not from the emir, from the Chinese ambassador. He took his briefing from the Chinese ambassador when our military was confronting the Chinese military in Doklam. So I want to say that I want to say, and this is the political thinking. Let me, sir, give you the economic thinking. In 2006, the UPA government. बैठे बैठे टिप्पणी मत कीजिए, आप बहुत कर रहे हो, नहीं, गलत है, बैठिए, बैठे बैठे टिप्पणी मत कीजिए। Sir, in 2006, because I want to illustrate my points with facts. I spoke about political facts, I spoke about border facts. Let me give you an economic fact. What is the economic thinking of the Congress party about China? In 2006, the Congress party agreed to do a regional trading arrangement with China. It was finalized during the visit of President Hu Jintao. A task force was appointed. The task force gave a positive recommendation. Through the efforts of various people, this did not happen. Let me give you the technology side. The very people today who are cautioning us on China are the people who allowed 3G and 4G to come from China. It is this government which made sure there was a made in India 5G. And finally, sir, we keep speaking about the border. The border, if today, whether it is the border with Pakistan, whether it is the border with China or any other border, if our military is today able to stand its ground, the kind of massive deployment that we saw on the China border after 2020, it is because our border infrastructure budget has gone up 4 times. Our tunneling, our road building, our bridging has doubled or tripled. And this is a far cry from the period when the thinking was, let's not develop the border because then the Chinese cannot come there. We had 60 years of neglect of the border. Today, in the last 10 years, that neglect has been reversed. There is still a lot of work to be done. So I think people need to understand. And it's not just in India, sir. We have just come back from Maldives. When I hear comments about foreign policy, yesterday, day before yesterday, the Prime Minister was the guest of honor at the Independence Day of Maldives. This is the country which during their time forced an Indian company to leave an airport. That country today has invited India to build 2 new airports. Look at Sri Lanka. If the Hambantota port was built between 2005 and 2008, and at that time it was actually justified as saying that it has no impact on India's interest. So I want, sir, the House to appreciate that the people who are today claiming to be custodians of national security thinking, who say that they are giving warnings, let us look at the record, let us see what they did when they were in office. But now allow me to come back to Operation Sindoor. So I want, sir, to conclude by saying this. The challenge of cross-border terrorism continues, but Operation Sindoor marks a new phase. There is now a new normal. The new normal has 5 points.
One, terrorists will not be treated as proxies. Two, cross-border terrorism will get an appropriate response. Three, terror and talks are not possible together. There will only be talks on terror. Four, not yielding to nuclear blackmail. And finally, terror and good neighborliness cannot coexist. Blood and water cannot flow together. This is our position. So let me conclude, sir, by recognizing the role which this body and the upper house has played during this period in explaining our national position and our national interest on Operation Sindoor. We had, sir, 7 parliamentary delegations which went to 33 countries. Some comments were made about those delegations. I have to tell the honorable member Arvind Sawantji, I'm sorry, you are completely misinformed. Those delegations were received with great honor. In many cases, the foreign minister of the country met them. Please look at the tweets of people sitting next to you. That itself will tell you. And इनके बगल वालों से पूछ ले जानकारी. Sir, these 7 delegations, the delegation led by Ravi Shankar Prasad ji, by Shashi Tharoor ji, by Baijan Panda ji, by Sanjay Kumar Jha ji, by Kannimori ji, by Supriya Sule ji, and by Shrikant Eknath Shinde ji. So these 7 delegations did the nation proud. They across the board, and every member, members of opposition, members of the government, public-spirited citizens, retired diplomats, they were able to explain to the whole world our posture of zero tolerance against terrorism. So I would like, sir, to end my remarks with the hope that on an issue as important as this struggle against terrorism, we can only succeed in ensuring zero tolerance against terrorism if we have a united voice in this country against terrorism. There must not be any division of opinion on this matter. The way the parliamentary delegations behaved abroad, I hope the same solidarity will permeate the proceedings of the House. I thank you. श्री मियां अल्ताफ अहमद. लोकसभा से आप सीधा प्रसारण दिख रहे थे केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के संबोधन का, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ एक नया नॉर्मल सेट किया है और उसके 5 प्रमुख तत्व हैं, जिनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा. खून और पानी जो है वो साथ साथ नहीं बह सकता है और किसी भी कीमत पर आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की कार्रवाई ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है. उन्होंने कहा कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और भारत की साथ जो है पूरी दुनिया इसमें खड़ी दिखाई दी. तमाम वैश्विक मंच हैं, ब्रिक्स है, क्वाड है, जिस पर निंदा की गई आतंकवाद की और पाकिस्तान जिस तरह से बेनकाब हुआ है. भारत के डिप्लोमेसी की जिक्र करते हुए, कामयाबी का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि तहव्वुर राणा को जिस तरह से भारत वापस लाया गया वो दिखाता है अपने आप में हम किस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. और साथ ही उन्होंने पूर्व की सरकारों के कई जो हैं इंसिडेंट्स हैं उनके बारे में भी बताया और कहा, उसकी तुलना की और बताया कि किस तरह से वर्तमान सरकार आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है. इसके साथ ही इस प्रसारण में फिलहाल इतना ही. दीजिए इजाजत. नमस्कार. नमस्कार. अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है. मैं हूं चंद्रशेखर जोशी. इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं.